Right now, okay? Okay, guys. So, बहुत कष्ट करे बाकी देखा जाओ आगु कौन हो तो आम देखुले टेस्ट वन डिस्कसन 50 क्वेश्चंस प्रिलिम टेस्ट सीरीज सो आमर अपकमिंग बैचेस आसूची मॉर्निंग बैच 5th मे रु स्टार्ट होची जो थे तुम फुल फ्लेजेड बैचेस रो फाउंडेशन पाखु एनसीईआरटी पाखु स्टार्ट करी एवरीथिंग रो तो आपंकर वन ऑन वन मेंटरशिप ओनली 30 स्टूडेंट बैच रो ये एडमिशन ऑलरेडी चलला देन प्रिलिम्स भी आपण मैंने जो मैंने प्रिपेयर करेंगे 25 मे जगह 25 एप्रिल स्टार्ट होची बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सो या भी आपण मैंने जॉइन करेंगे टेस्ट सीरीज आज जो स्टार्ट होती ये टेस्ट सीरीज मात्र 2,500 टकर 28टा टेस्ट पाँच सो आम प्रथम क्वेश्चन देखुले तो कलारी पायतु एन एनशिएंट मार्शल आर्ट इन द स्पॉटलाइट ऑफ 38th नेशनल गेम्स ये ओरिजिनेट होता केरला ये क्वेश्चंस थिला कि भाई वुडन वेपन द्वारा ओनली यूज करती बट ना वुडन जगह मेटल वेपन भी बोथ मेटल एंड वुडन यूज करा जाए तो से ये रॉन्ग है स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 इज राइट सो ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट सो या विषय आम देखिले कलारी पायतु इन केरला बहुत एनशिएंट एवं ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट इन द वर्ल्ड से यार इंपोर्टेंस से बढ़ी जाए दिस इज द ओल्डेस्ट जोटे कि मार्शल आर्ट इन द वर्ल्ड सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन रिगार्डिंग पोलर वर्टेक्स तो पोलर वर्टेक्स जो देखा मोस्टली कोलर रीजन रे देखा जाए एवं से लो प्रेशर बेसिकली केत हुए जो कोल्ड एयर एंड लो प्रेशर लार्ज एरिया ऑफ कोल्ड एयर कौन हम नॉर्थ आउ साउथ पोल रे अर्थ नॉर्थ एंड साउथ पोल ये देखा जाए तो पोलर वर्टेक्स इज एसोसिएटेड विथ जेट स्ट्रीम so polar vortex it is a large low pressure area of a cold air swirling at the top okay. So polar vortex is a large area of low pressure and cold air that surrounds Earth's north and south pole. It is a natural feature of the atmosphere that traps cold air in the polar region. Cold air को से trap करते vortex ही जाए तो vortex type create कर दिए. So polar vortex events are seasonal but not guaranteed annually. So polar vortex is closely associated with jet stream which acts as a boundary between cold polar air and warmer air from the lower latitude. ता भीतर गोटे बाउंड्री भाया ये काम करे. तो टाइप्स ऑफ पोलर vortex देखिए ट्रोपोस्फेरिक पोलर vortex अच्छी स्ट्राटोस्फेरिक पोलर vortex ये तुम देखिपर तो पोलर vortex ये vortex भाया गोटे सिचुएशन क्रिएट कर दिए जोटा कि ट्रैप कर दिए और गोटे बाउंड्री भाया क्रिएट कर दिए सब बोथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल देखा जाए देखिपर तो द नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वामित्व scheme. It is a central sector scheme of Ministry of Panchayati Raj. It is a central sector scheme of the Ministry of Panchayati Raj. This scheme is a reformative steps towards establishment of a clear ownership of the property in rural inhabited area. Okay, this scheme is a reformative steps towards establishment of clear ownership of the property of rural inhabited area. So या भीतर कौनटा क्वेश्चंस कौनटा राइट आंसर अच्छी एनीवन चाहे आंसर दे परियो सो both statement A and B both statement A and B are correct. Both statement A and B are correct. So Swamitra scheme aims to provide property card to rural household unlocking economic activity worth over 100 lakh crore. Swamitra scheme ये रूराल ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम तुम्हें यू आहरी गोटे क्वेश्चंस बाहर कर सेंट्रल सेक्टर स्कीम आ गोटे सेंट्राली स्पॉन्सर स्कीम से भर डिफरेन्स कौन यहाँ भी तुम्हें निजे माइंड लगे क्वेश्चंस रू बाहर कर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज अंडर आसुची तो स्वामित्व स्टैंड फॉर सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया तो एम कौन ना स्कीम रिफॉर्मेटिव स्टेप्स टुवर्ड एस्टाब्लिशमेंट ऑफ क्लियर ओनरशिप of the property in the rural inhabited area. Next question. Dr. L.M. Singhvi coined the term Lokpal and Lokaयुक्त
and Lokpal Lokayut constitutional body to combat corruption in public offices. ये भी क्वेश्चंस पचार देख सब यही जिन ध्यान देउथबो करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट भीतर तुम्हें सब ध्यान देउथबो क्लियर so which of the above statement incorrect LM Singhvi coined the term Lokpal Lokayut so this statement is LM Singhvi जानि छ presently सुप्रीम कोर्ट जो एडवोकेट अछनी एवं कांग्रेस रे जो नेता अभिषेक मनु सिंघवी तांकर ये बापा थिले ये जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन पई यांकर कमिटी भी थिला LM सिंघवी कमिटी तो लोकायुक्त एक्ट आसिला केबे 2013 रे एवं 2013 रे जो आसिला सेइथरे statutory body it is not a constitutional body it is nowhere mentioned in the constitution of India so it is a statutory body so statement 2 is incorrect so only 2 is correct one so explanation anusare dekhibo India is celebrated first foundation day of Lokpal making 11th year since its establishment under Lokpal Lokoyukt Act 2013 so this is a act through रे हेजी 2013 Lokpal Lokoyukt perform the role of ombudsman माने तुम ग्रेवेंसेस थिबो ombudsman में बेसिकली करप्शन रिलेटेड किसी एलिगेशन हेले सेइतरे ये हबो तो ये ombudsman सिस्टम ओरिजिनेट हेइतिला स्वीडन रु 1809 रु देन धीरे धीरे इंडिया फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थिले अशोक कुमार सेन फर्स्ट इंडिया टू प्रपोज करथिले कांसेप्ट जो ombudsman कथा पार्लियामेंट रे बट एलन सिंघवी ये टर्म कॉइन करथिले टर्म लोकपाल एंड लोकायुक्त इन 1963 लोकपाल फॉर सेंटर गवर्नमेंट जे कि किए कहि परियो प्रेजेंट लोकपाल हमर किए अछंती एंड लोकायुक्त हला स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पई लोकायुक्त सेंटर पई लोकपाल ओके 2013 रे ये एक्ट हेइथिला दिस एक्ट एस्टैब्लिश स्टैट्यूटरी बॉडी टू कम्बैट करप्शन इन पब्लिक ऑफिसेस so Lokpal was constitutional on January 16 2014 रे एज ए 2-tier system with Lokpal at the union level and Lokayukt at the state level तो समझते मोर आवाज क्लियरली सुनी पारछो तो एम आई ऑडिबल गाइस ओके देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एवरी नाउ एंड देन रिस्क माने रिपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस तुमरे एग्जाम रे आसे तो ये भी सही बढ़िया सो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 रे वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम रिलीज करे द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 रिपोर्ट हाईलाइट स्टेट बेस्ड एम्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एट द टॉप immediate global risk which of the above statement correct which of the above statement is correct which of the above statement is or are correct तो कौन कौच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करे यस दैट्स राइट आर्म कॉन्फ्लिक्ट एंड ग्लोबल रिस्क उपरे सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट so world economic forum global risk report जोंडे कि long term risk urgent global action so risk for India the top risk for India the report highlight the top 5 risks for India include water supply shortage misinformation disinformation erosion of human rights civic freedom pollution air water soil and labor and latent shortage the immediate risk next 2 years misinformation disinformation extreme weather event state based armed conflict ये सही प्रकाश पाई लॉन्ग टर्म रिस्क कौन ना एक्सट्रीम वेदर इवेंट बायोडाइवर्सिटी लॉस इकोसिस्टम कोलैप्स क्रिटिकल चेंज इन द अर्थ सिस्टम ये सब देखा जाउची सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज फर्स्ट सिटी टू रिसीव वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन ये भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन अंडर रामसर कन्वेंशन उपरे भी क्वेश्चंस आसे तो मुझे यही क्वेश्चंस देखिल तुम्हें यही क्वेश्चंस कौन फाइंड आउट करिवो ये क्वेश्चंस तुम्हें डिटेल्स जीवो कि रामसर कन्वेंशन कौन तो व्हेन डिड रामसर कन्वेंशन हैपन ये तो आंसर दबो ता सहित तार लिंक क्वेश्चंस लिंक नॉलेज पाई परिवो कि रामसर कन्वेंशन कौन रामसर कन्वेंशन अंडर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कौन रामसर कन्वेंशन अंडर जोंडा थाए कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कौन रामसर कन्वेंशन केबे हेतिला कोठी रामसरटा कौ जगह रे ये सब तुम्हें फाइंड आउट करि परिवो सो करेक्ट आंसर विल बी
1 and 2, Indore and Udaygiri. So D, Indore and Udaygiri become the first Indian city. Huh? हाँ तो से उदयपुर और इंदौर सो cities receive wetland city accreditation under the Ramsar Convention of Wetland globally 31 accredited city रे ये अच्छी total. So accredited city कौन? What do you mean by this? So Sirpur Lake, Indore, a Ramsar site, is recognized for its role in water bird congregation and is being developed as a bird sanctuary. Similarly, Udaipur is surrounded by 5 important wetlands, जोंटे कि पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, and दूध तलाई. And these wetlands play a crucial role in cities' cultural identity, microclimate regulation, and protection against extreme weather events like flood हो wetland city accreditation. तो बेसिकली कौन ना एमती सिटी जी कि वेटलैंड को इम्प्रूव करुच्ची एवं वेटलैंड को रिजुमिनेट करुच्ची तापाई बहुत काम करुच्ची. सो वेटलैंड एक्रेडिशन जोंटे सिटी एक्रेडिशन इज ए वॉलंटरी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन स्कीम established by Ramsar Convention to promote conservation and wise use of urban wetland. तो ये दुटा सिटी को मिली उदयपुर और इंदौर. ये तुम्हारे अपकमिंग एग्जाम पे इंपोर्टेंट हो पारे. It aims to recognize cities that actively conserve and sustainably manage their natural and human-made wetland. ये ला Indore and Udaipur become the first two Indian city to join the global list of total केते 31 city रू इंडिया रा दीटा सिटी. तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट. सो ये गोटे क्वेश्चंस हो पारे पोटेंशियल क्वेश्चंस हो पारे मोर एग्जाम पाई. The government of India recently formed a expert panel to develop a roadmap for switching to producer price index. Who is heading this panel? এটা ডাইরেক্ট কোশ্চেন ফ্যাকচুয়াল কোশ্চেন্স. তো এইথে তুমি গোটে কনসেপ্ট জানিব কি প্রোড্यूसर प्राइस इंडेक्स कोन. এটা फैक्चुअल विषय जो देखो रमेश चांद द करेक्ट आंसर. ये ले रमेश चांद गवर्नमेंट पैनल लेड बाय रमेश चांद टू रिवाइज WPI बेस ईयर एवं एज वेल एज प्रोड्यूसर PPI. So the government formed an expert panel headed by Niti Aayog member Ramesh Chand develop a roadmap for switching to producer price index. Basically producer price index जेमती आमे CPI करूछु, WPI करूछु. CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI है होलसेल प्राइस इंडेक्स, आउ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है जो प्रोड्यूसर जी रियल प्रोड्यूस करूची तार सेठू प्राइस टा बेसिकली इंडेक्स क्रिएट करा जीवो. जेमिति आमे एबे इन्फ्लेशन कैलकुलेशन करियारे दीटा पैरामीटर हम यूज करला. CPI ये है कंज्यूमर पाखरे जो प्राइस टा पहुँचुची सेही प्राइस अनुसार गोटे इंडेक्स बना जाए तार गोटे एवरेज बना जाए. सिमिलरली WPI रे जे होलसेल मार्केट रे जो होलसेलर अच्छी गोटे प्रॉपर गोटे धर भुवनेश्वर गोटे होलसेलर अच्छी जे कि राइस रो होलसेलर बड़ होलसेलर ता पाखर प्राइस पचार देबे केते अछि देन सही अनुसार इन्फ्लेशन डिसाइड करा जाए. देन आउ लास्ट एस लाइक प्रोड्यूसर जी रियल प्रोड्यूस करूची मार्केट को आसीबा पूर्वरु जी रियल प्रोड्यूसर जी राइस करूची अटा करूची डाली करूची री प्रोड्यूसर पाखर केते प्राइस रे बेसिकली बिक्री होची. देन ओनली यू कैन नो द वेरिएशन कि प्रोड्यूसर पाखर केते मिलुची कंज्यूमर पाखर केते मिलुची होलसेल पाखर केते मिलुची. देन तुमे गोटे प्रॉपर प्राइस रो वैल्यूएशन जानि परिबो एवं इंडेक्स ताकू गोटे एनालिसिस करि परिबो कंपैरेटिव सेंस रे एनालिसिस करि परिबो. तो सेहि पई so will oversee the revision of wholesale price index base year to 2022-23 करलु from 2011-12 थिला आगरु make major factory get inflation more accurate. Then a new 18-member working group led by Niti Aayog member Ramesh Chand shall also examine the proposed producer price index PPI to suggest roadmap for switching from WPI to PPI. So basically कौन गवर्नमेंट तुम DA दिए हमने तो DA दिए एक्चुअली तुमको WPI बेस दिए. DA कौन पाई दिया जाए तुम्हारे इन्फ्लेशन बढ़ीगला पर इन्फ्लेशन जेहेतु बढ़ुची मार्केट इन्फ्लेशन मिलूँ डियरनेस अलाउंसेस से अनुसार DA दिए. बट कंज्यूमर जी तुम यू आर द कंज्यूमर तुम्हें मार्केट रू किणुच कौन थे कंज्यूमर रेट रे बट गवर्नमेंट तुमको प्रोवाइड करुच्ची DA WPI होलसेल. एवं गवर्नमेंट प्लानिंग करुच्ची PPI रे दबो माने प्रोड्यूसर पाखर जो प्राइस आसी सेटा है एक्चुअली
प्राइस से माने बट एटा नुह रियल है जी कि आम जो किणुचु आमको तो बर्डन जहाँ पाखु किणुचु से पड़ुची ना तो ये गोटे अच्छी देख नेक्स्ट रिगार्डिंग पे कमिशन. Pay commission are generally formed every 10 years under the Department of Expenditure, Ministry of Finance. It is an advisory body, है ना नहीं? So every 10 year हुए. एबे 7th पे कमिशन जाइए एबे 8th पे कमिशन आसूची आगो को 2026 रे 2006 रे हितला फिर 16 रे फिर 26 रे तो बहुत स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो पे कमिशन जो देखिबो अपन सेंट्रल गवर्नमेंट सेट अप पे कमिशन टू रिव्यू द सैलरी स्ट्रक्चर अलाउंसेस रिक्रूटमेंट बेनिफिट रिटायरमेंट बेनिफिट गवर्नमेंट एम्प्लॉई कंसीडरिंग इन्फ्लेशन इकोनॉमिक कंडीशन एंड मार्केट रेट्स. The legal status, it is an advisory body with no mandatory authority for government to accept its recommendation. So pay commissions are generally formed every 10 years and first one was established in 1946. देखो every year रे 46 पाखु every 10 year रे थरे चली 46, 56, 66, 76, 86, 96, 2006, 2016, 2026 रे हबो. So the pay commission operates under the Department of Expenditure, Ministry of Finance and comprises expert of in various field. 7th pay commission एके माथुर कमिटी थिला के से कहथिले 18000 मिनिमम सैलरी करा जाऊ एवं 9000 पेंशन मिनिमम करा जाऊ ये सब कहथिले. सेंट्रल गवर्नमेंट किछि किछि रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कला. नेक्स्ट क्वेश्चंस तुमर जे आगे सिविल सर्वेंट हम कि जॉब पाइला परे तुम मेन एम थी गाइस पे कमिशन केबे लागू हम टिके बड़ हाइक मिलियो. तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन आर्मी डे. इंडियन आर्मी डे के एट फैक्चुअल क्वेश्चंस रा यस 15 जनवरी हुए बट सर्वत्र शांति नुह यही थीम टा रंग अच्छी. सो करेक्ट स्टेटमेंट जदि वन ओनली ए इज द करेक्ट आंसर. सो सेलिब्रेटेड January 15 एवरी ईयर रे. To mark the appointment of Field Marshal K.M. Cariappa as the first Indian Commander-in-Chief of Army in 1949, replacing British General Sri Sir Francis Butcher. बचर को रिप्लेस करिकी ये करियप्पा होते और से दिनटा को अपॉइंटमेंट को आर्मी डे सेलिब्रेट करा जाए करियप्पा. देन थीम थिला कौन ना समर्थ भारत सक्षम सेना. समर्थ भारत ये खाली सर्वत्र शांति कह दी. तो समर्थ भारत सक्षम सेना ये तार थीम थिला कि बाकी मिलिटरी वगैरह तो ये सब. नेक्स्ट क्वेश्चंस द 77th आर्मी डे ये सब 15 जनवरी 2025. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स शिप एंड टाइप INS सूरत, INS नीलगिरी एंड INS वागशीर. Which of the following pair is correctly matched? Which of the following pair is correctly matched? ये करेक्ट अच्छे सिल्थ फ्रिगेट बाकी ये नहीं तो राइट. INS वागशीर इज डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन नॉट ए न्यूक्लियर वन. तो ये से ये है बाकी सब तो बाहरी 1 and 2 होटा बोलेगा. तो 3 मेजर फ्रंटलाइन कंबाटन अच्छी कौन ना INS सूरत, INS नीलगिरी एंड INS वागशीर. तो ये 3टा कंबाट्रु 2टा है न्यूक्लियर वन आउ वागशीर है तुम डीजेल आउ इलेक्ट्रिक. एंड कमिशन इनटू इंडियन नेवी एंड मेकिंग द हिस्ट्रिक स्टेप एनहांसिंग इंडिया मेरीटाइम कैपेबिलिटी एंड डिफेंस प्रोडक्शन. तो नीलगिरी देखिए ऑपरेशन 17 प्रोजेक्ट 17A अंडर होता शिवाली क्लास फ्रिगेट. सिमिलरली ऑपरेशन सूरत देखिए प्रोजेक्ट 15B डेस्ट्रॉयर. सूरत इज ए सक्सेसर क्लास ऑफ कलकत्ता प्रोजेक्ट 15A. देन वागशीर है 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमेरीन अंडर द कालवारी जोटा कि क्लास प्रोजेक्ट 75. ये 3टार फैक्ट्स जानीजिए तुम कम आसो. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इसरो चेयरमैन. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. इसरो चेयरमैन 2टा को स्टेटमेंट तुम ठीक अच्छी बोथ 1 and 2. तो V नारायण जी की रिसेंटली अपॉइंट होते veteran rocket propulsion expert is said to assume the role of chairman of 2-year term. सोमनाथ पर एस सोमनाथ जे कि हिस्ट्री होता समय. तो इसरो चेयरमैन 2 वर्ष को थे हमें जी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रो भी सेक्रेटरी भाया काम करती. एंड एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ स्पेस कमिशन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ स्पेस कमिशन भी ये रुहन.
Consider the following statement regarding Punjab Wildlife Department declare Northern Goswak as the official state bird. Northern Goswak is the official state bird. It is commonly found in urban environments across India. IUCN classify it the least concern. Questions पचारची देखो इनकरेक्ट पचारची. Questions is asking about incorrect. Urban across India ना India रे मिलेनी. Few regional least concern. This one is basically incorrect one. Incorrect questions पचारची. A is the only one. This is the IUCN list रो अच्छी. So Punjab Wildlife Department declare Northern Goswak as its official state bird. ये वाला. Earlier Punjab had declared Eastern Goswak as the state bird. Then ebe taku declare कराइची. However, there is a no bird named Eastern Goswak. The Eastern chanting Goswak जोंटे की Escipeter rufiventis, a species native of Africa, unrelated to Punjab. So सेइथिପାଇଁ conservation status now classified as a rare in Punjab. The northern Goswak is a raptor classes, bird of prey, found mainly in forest region. It is not commonly seen in urban area. So ଏଇଟା ହେଲା wrong answer थिला. Consider the following statement regarding Pamban rail bridge. Recently Prime Minister जाइथिले. So Pamban railway India first vertical lift railway bridge. A new Pamban bridge connect Dhanuskodi to Rameswaram. Dhanuskodi to Rameswaram and Rameswaram to. So ये statement is wrong. ये statement is correct. So one only. So 1A is the correct answer. So Pamban it connect Rameswaram Iceland with Mandapam on the mainland. So ସେଇଟା Dhanuskodi no. 1964 destroy ହେଇଥିଲା 110 year old Pamban rail bridge. So Pamban Island only links to mainland India, and the cyclone bearing wind over 150 km destroyed the rail link connecting Rameswaram and Dhanuskodi, just 24 km west of Sri Lanka's Talai Manar. Yeah. Vertical lift Mandapam ru Rameswaram. 80 एटाला mainland, एटाला Rameswaram. देखो ये श्रीलंका रू जस्ट श्रीलंका एरिया बहुत पाख धनुषकोडी लाइटी एटा रामेश्वरम एटा हैला एटा कनेक्ट हिच टोटल 535 करोड़ रो खर्च हिच. व्हाई आर सेंट्रल बैंक एक्युमुलेटिंग गोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी. काहे कि सरकार गोल्ड रखे पैसा संचय करिया पई कि रेट बढ़ी जीव रखी देबा ना कोन. पैसा बढ़ी जीव रखी देले काम रे लागि जीव ना. So basically because gold is becoming the primary gold currency, global currency, replacing all flat जोंटे की money, all flat money. So कौन या to diversify reserve or reduce dependency on US dollar. Due to increase in demand of gold domestically, because gold generate high, so reserve को diversify. B is the correct answer. Central bank worldwide are actively accumulating gold to diversify reserve and reduce dependency on US dollar. Gold is seen as a safe haven asset during the time of economic recession or instability or geopolitical instability, and making it a valuable tool for stabilizing economies and currency. So next question, sovereign green bond. Sovereign green bond are first announced in 2024-25 budget by Indian government to raise fund. Is it right? Then in India, foreign institutional investor can invest sovereign green bond. So actually correct answer là कौन ना two only. First टा कौन दीजिए दा 24-25 में 22-23 2022 रो बजट रे कहितले. So ये right two only. Sovereign green bond issued sovereign entities like Government of India, which established a framework for their issuance in 2022. So this bond fund green project that promote energy efficiency, it reduce करिवो carbon emission हो, enhance करिवो climate release, support natural ecosystem को support करिवो. RBI basically allow करे FII
operate within the International Financial Service Center IFSC to invest in India's foreign green bonds market in significant steps toward financing nation's transition to low carbon. इतमें ग्रीन प्रोजेक्ट ग्रीन सोवरेन ग्रीन बॉन्ड को आउची ग्रीन माने फॉर इन्वेस्टमेंट हम कौन थे एनर्जी एफिशिएंसी ग्रीन प्रोजेक्ट जो थे कार्बन एमिशन कम हम तुम रिन्यूएबल एनर्जी रे नेचुरल इकोसिस्टम जो सपोर्ट कर आरबीआई प्रिंट एक्स्ट्रा कैश कौन हम जदि आरबीआई एक्स्ट्रा कैश करे या कहीं करे when RBI print extra cash when RBI so basically it will increase both liability as well as asset cash आनी केते कैश प्रिंट करिवो जेतेबेले मार्केटर कैश न थाए आउ एक्स्ट्रा कैश करियो माने जदि भी सी करदेला भी प्रिंट प्रिंट जदि एक्स्ट्रा करदेला तार लिएबिलिटी बढ़ी जो कहीं कमोडिटी से भाया हवा दरकार so C will be the correct answer so when government will directly borrow from RBI then RBI will print extra cash so basically government रो requirement हेले भी कही पारे सरकार give it the government and government will have issue give security bond और जोंडे की GSAC को आ जाए GSAC government security will have to issue and give security or bonds to RBI. The case which RBI prints is liability on RBI, but the government securities which RBI will get is an asset for RBI. जदि गवर्नमेंट नब पैसा RBI पाखु लेट से सरकार को पाखर पैसा नहीं सरकार कहला तू प्रिंट करिक मते दे पैसा दे मो लोगों को इनफ्यूज करी चले बैंक वगैरह ये इनफ्यूज करा जाए तो सेतेबेले जदि करिवो आरबीआई कौन नब सरकार कौन कह मुझे सिक्यूरीटी दूची जीसाक ने एवं से अनुसार मानिने 3 लाख करोड़ प्रिंट कर दे तो प्रिंट करदेला माने एसेट क्या पाक आसला आरबीआई पाक एसेट कौन ना इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्यूरीटी आउ दब कौन बेसिकली गवर्नमेंट पाखे कौन आसला लिएबिलिटी गवर्नमेंट को दबा पड़ो so when RBI print additional 3 lakh crore cash and give it to the government then RBI liability represented by cash will increase by an amount of 3 lakh crore and RBI's asset will increase by 3 lakh crore represented by the government bond security asset जोटा कि government bond liability है जोटा कि government को देला 3 lakh crore which of the following may result in rupee depreciation this is also very important concept rupee depreciation RBI following an expansionary monetary policy government stimulating the economy through deficit financing from RBI so select the correct code कौन यार आंसर कौन हम कह बूथ स्टेटमेंट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो हुए ही रूपी डेप्रिसिएशन करा जाए एंड गवर्नमेंट स्टिपुलेट करे इकोनॉमी थ्रू डेफिसिट फाइनेंसिंग so because of expansionary monetary policy other either repo rate is reduced which will result in decrease in the interest rate in the economy or may open market operation जे किणा मेका करेंगे through security bond through can be done and will be give more money to the banking and financial system which again will result in decrease in interest rate because of surplus liquidity so expansionary monetary policy will result in reduction in interest rate in the economy which may result in foreign portfolio investment bond market leaving the domestic economy resulting in depreciation of so deficit financing from RBI means government is borrowing money from RBI माने कौन RBI प्रिंटिंग करुच्ची सेटा कहला कह जाए deficit financing and spending in the economy through infra construction payment MG नरेगा हो सब्सिडी हो ये सब सरकार खर्च करुच्ची RBI को कहूँ तू प्रिंट कर एक्स्ट्रा कैश एवं RBI पाखु सरकार बोरो करुच्ची which result in reaching more money into the public resulting in increase in demand in the economy and inflation in the domestic economy which will result in depreciation the domestic currency in the forex market
टिके जी बिल्कुल बुझी नथियो ताको डिफिकल्ट हबो जदि टिके इकोनॉमिक्स बुझी ताले तुम एटा ठीक से करि परिबो तो सेति पई डिटेल्स रे बुझिए पहले खाली कांसेप्ट टिके लागी जो 15-20 so what does the term twin balance sheet problem what is the term twin balance sheet problem या माने कौन बुझुछ refer to Indian context high fiscal and current account deficit rising NPA in public and private bank stress in the balance sheet of banks and corporates and decline in the government revenue and tax buoyancy so correct answer will be tomorrow this one stressed bank दीटा आग बेसिकली सबुठ बड़ प्रोब्लेम है कि बैंक और कॉर्पोरेट बैंक जी लोन दिए कॉर्पोरेट जी लोन लिए आ बैंक रो पैसा जदि कॉर्पोरेट पाखर रहीगला तामाने दी जनकर बैलेंस शीट प्रॉब्लम हो दी जनकर डेफिसिट हो दी जनकर बेसिकली पैसा रही तो से दी जनकर बैलेंस शीट को ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहा जाए स्ट्रेस्ड इन बैलेंस शीट ऑफ बैंक्स एंड कॉर्पोरेट एटा कहा जाए ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम TBS report a situation where both Indian banks and corporation face financial distress simultaneously characterized by high level of non-performing asset in banks and expressive debt accumulation in the corporation potentially destabilizing the ये डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन टा सो 4.4% फिस्कल डेफिसिट ये मन रखा दरकार नहीं सेमती आसेनी बट क्वेश्चन तुम्हें देखिपार से भाया क्वेश्चन नंबर 20 द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म लिक्विडिटी ट्रैप ये भी गोटे कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी ट्रैप the situation where monetary policy has no effect on the interest rate or the level of income मॉनिटरी पॉलिसी माने तुम रेपो रेट बढ़ेले कमेले SLR बढ़ेले कमेले CRR बढ़ेले कमेले किसी फरक पड़ो ना से कंडीशन को बेसिकली लिक्विडिटी ट्रैप कहा जाए describe situation where monetary policy becomes ineffective meaning that even with extremely low interest rate people refer to hold into cash rather than invest or spend or thus failing to stimulate the economy देख मनीष जदि जदि सब पैसा मनीष निज पाखे रखीदेव इकोनॉमी चलनी तो तुम पाखे जहाँ पैसा अच्छी खर्च करा पड़ो गाड़ी किण बंगला किण देन नहीं इकोनॉमी रन हम तो से लिक्विडिटी ट्रैप केस रे मनीष सब पैसा रखीदेव मार्केट छाड़बनी तो इफेक्ट हेनी मॉनिटरी पॉलिसी किसी इफेक्ट हेनी तो सबमरीन रिलीफ ये पिक्चर ही देखीदे तुम्हें जानीज यार पिक्चर देखीदे जानीज कंटेनर सेल्फ ये किसी बेसी बुझीबार नहीं ये पिक्चर तुम्हें देखिए जानीदेव ये कंटिनेंट ये सेल्फ देन ता तलक है स्लोप ये ब्रेक देन स्लोप देन राइज देन एबिसल जोटा कि एबिसल छोटे छोटे हिल जोटा कि ये पाइब एबिसल प्लेन ये भाया सिक्वेन्स तुम्हें देखी थी सो करेक्ट आंसर विल बी ए हम कंटिनेंटल सेल ऊपर रहा देन कंटिनेंटल मोर स्लोप तापर जाकि राइज तापर जाकि एबिसल प्लेन तापर है मिड ओशनिक रिजेस ये सिक्वेन्स आसो पिक्चर को मान मन रखी जदि आराम से कर दे परिबो Consider the following statement: the near the equator, the level of ocean water is higher than in the middle latitude. The Coriolis force causes the ocean water to move to the left, the northern hemisphere. Water with high salinity is denser than water with low salinity. Correct. Noda. Easy one अच्छी एटा. So Coriolis force causes ocean water move left. एटा northern hemisphere हबो जदि एटा right हबो. है ना? Northern hemisphere ये towards right. Southern hemisphere left. तो ये टिके गेम खेल दीजिए सो दिस इज रॉन्ग राइट और दीटा स्टेटमेंट ओनली 2 स्टेटमेंट इज राइट
ये नेक्स्ट जानिए नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग एटमॉस्फेयर ये भी इजियर वन करेक्ट स्टेटमेंट पचारची correct statement yes the top of the message coldest that is true meteor primarily burns up this is true satellite particularly low earth orbit within the mesosphere na wrong eta so correct statement 1 and 2 so satellite in the leo do not orbit within the mesosphere they orbit within the thermosphere तो से अनुसार देखी दियो satellite रो consider the following statement regarding bt cotton bt cotton only gm crops commercial cultivation in india that is right or wrong right or wrong this is right created to combat widespread infestation of bollworm yes that is also right C is the correct answer so bt cotton in 2002 india commercialized the bt cotton माने first time ताको allow करा गला commercially cultivate करिया पई which resulted in a significant improvement so bt cotton गोटे कंपनी थिला Monsanto जहार पेटेंट थिला Monsanto US कंपनी जहार पेटेंट थिला कि genetically modified organism बनेवार export on textile industry it is the only approved gm crop for commercial cultivation in 2002 it is created to combat the widespread infestation of bollworm gm master ye not been begun yet dark matter reference to dark matter cosmos so basically dark matter visible and absorb radiation not visible cosmos so dark matter is interact only through gravity and weak atomic force so b is the correct answer so what is dark matter dark matter is the most prevalent form of matter in the cosmos without it the star might not have formed so dark matter was present in the early universe across the cosmos and is necessary for all cosmic structure formation dark matter is invisible and does not absorb radiation so invisible thila statement 1 incorrect it deflects light due to gravity and it alters the shape of the galaxy this effect is known as gravitational weak lensing dark matter interact only through gravity and weak atomic force dark matter cannot be observed or detected because it interacts with neither strong atomic forces nor electromagnetic which of the following statement is incorrect regarding Newton's third law which of the following statement is incorrect regarding Newton's third law questions are C incorrect both statement are correct है ना यदि ये भी करेक्ट तो यदि ये क्वेश्चन एठी भी पचार एठी पचार टिके कन्फ्यूज हो जिवो बट जदि करेक्ट हम यहाँ स्टेटमेंट हम जदि करेक्ट हेनी ताले यहाँ ठीक हो ओके ये तुम देखिपार रिएक्शन एंड रिएक्शन पिला बेलू पढ़ीच रिसेंटली पिनाका मल्टीवेरल रॉकेट सिस्टम इज इन न्यूज किए लॉन्च करते वेरेल रॉकेट रॉकेट माने डीआरडीओ हम नासा हेनी कि इसरो हेनी यहाँ इजी अच्छी ये the area in is rich in flora and fauna and Maldharis is a pastoralist tribal group living in the area. It is considered to be the largest grassland in Asia. The above statement talk about Kong grassland, Bani grassland. Bani grassland. It देखियो. Run of Kutch रे पाइबो. It is term as the term secular was added in Constitution by 42nd Amendment 1974 wrong 1976 ये सपोर्ट करे आइडिया ऑफ सेकुलर
but there is no official religion. The meaning, yeah, secular state or meaning wale there is no official meaning. तामाने कौन बुझुछ एटा? So which of the above statement is correct? So ये statement भी wrong है and this statement is wrong also. तो जदि इनकरेक्ट पचार थिबो तो both 1 and 2 हबो, जदि करेक्ट पचार थिबो ताहले neither 1 nor 2 हबो. Okay, D is the correct answer. So जदि correct पचारछि, this will be the answer. तो एटा ईयर टा भूल होइछि, एटी सी टा जो तुमर आंसर देछि एटा आंसर भूल अछि. सी जदि हबो जतले इनकरेक्ट देथियो, अदरवाइज सेही अनुसार डी इज द करेक्ट आंसर. नाइदर वन नॉर. तो मु कहूली सुपर 30 बैच मॉर्निंग बैच 5th मे रु स्टार्ट होची. जो माने एनरोल करियार अछन मात्र फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस 30 जन पिला केवल ही आसीबे, ताटू अधिका पिला निया जीवन नहीं. तो पूरा इंडिविजुअल गाइडेंस पाइबो सिलेक्शन पर्यंत विल टेक केयर ऑफ इट. प्रीलिम क्रैश कोर्स जे की स्टार्ट होची से भी 25th एप्रिल रु स्टार्ट होची. एप्रिल रु सेटा भी जॉइन करियो समस्ते. एवं टेस्ट सीरीज मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट. Under which schedule of the Constitution India can transfer of tribal land to private parties mining be declared null and void? Fifth schedule tribal आसियो माने fifth schedule आसियो. So 30 हला B. According to Samotha versus Andhra Pradesh and others, judgment Supreme Court कहितला कोन transfer of tribal land to private parties for mining and was null void under fifth schedule. Which of the following officer has the power to disqualify a member of legislature for occupying an office of profit? Office of profit disqualify करियो किए? Parliament. Article 102 of the Constitution recognize holding office of profit under government and ground for the disqualification from the being a member of parliament as well as contesting parliamentary election to be chosen as MP. रायसेना डायलॉग मनमोहन सरकार समय रही ना. 1 रॉन्ग हेले 2 3 एक्चुअली सी आउ बी ए भितर जोटा आंसर हम तुम दीटा 2 and 3 दिखाई. तो दीटा आग स्टेटमेंट ठीक अच्छी. देन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट डज नॉट अप्लाई टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. ये भी टिके फैक्चुअल जिनस बट इंपोर्टेंट. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोराम ये 3टा स्टेट को अप्लाई हुए नहीं. आउ एगुड़ा सब अप्लाई हुए. CAA basically 6th schedule which include tribal area in the state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram does not apply to Arunachal Pradesh, Nagaland and Mizoram. Additionally, the area covered by the ILP are also exempted from CLP, inner lining permit. Then asiba amara modern history questions, questions. Arrange the following battle fought by Babur in a chronological: Battle of Chanderi, Battle of Ghagra, Battle of Panipat, Battle of Khanwa. Battle of Panipat प्रथम थर पई बाबर लड़ी थिले. तो सही सीक्वेंस अनुसार तुम यदि कहि दबो तो बी बैटल ऑफ पानीपत आगे हम 1526 रे. तापरे बैटल ऑफ तुमरो खानुआ 27 रे. 3 4 1 2 चांदेरी एंड घाघरा. सो 3 4 1 2 26 रे, 27 रे खानुआ, चांदेरी 28 रे, 29 रे घाघरा. का भीतर रही देखी दियो. इंडियन साइट such as Kangar Valley National Park, Chausath Ogini temples were recently added to UNESCO list of basically tentative list. UNESCO tentative list रे ऐड कराई जी. UNESCO tentative list. Then ये added कराई जी सब 6 Indian site including Telangana, Mudumalai, megalithic menhirs, Chausath Yogini temple and Kangar National Park to its tentative list. Consider the following statement regarding Portuguese in India.
Vasco da Gama was the first European to reach India via sea route in 1498. True statement. Alfonso Albuquerque is credited to establish Portuguese factory Calicut. ये wrong. Goa was captured. ये right. 10. So 1 and 3. 1 and 3. B is the correct answer. 1 and 3. B is the correct answer. Cabral आसते Cabral basically Calicut. हाँ हाँ ना ना 30 रे कौन दब मु तो कही तुम 10 रे 30 रे केमती हो किए कही कहला दे दो कही रे भूल देछि केबे पॉसिबल हो पारिबनी गोवा इज द फर्स्ट बीट ऑफ लैंड जोटा कि से कैप्चर करथिले 1510 रे 1530 रे केमती हो हां जदि 1530 कोठी भी लिखाई थियो सेटा भूल लिखाई थियो बुझिलो एक्चुअल हैला 1510 केबे भी पॉसिबल नो what are the key feature of Charter Act 1833? It made Governor General of Bengal the Governor General of India. It ended the East India Company commercial function. It ended system of open competition. This is wrong. 1853 रे ये करथिले so 3 wrong हेगला 3 wrong माने 1 and 2 done. Okay. Ended करथिला East India Company commercial function purely administrative function 1 and 2 is the right answer. ये सब क्लासेस रे तुम पढ़ाई जिजिया जिजिया हला नॉन मुस्लिम टैक्स both Muslim and Muslim, so ये कभी भी होवे ना so introduced by कोतवाली दाइवा that is true. A is the correct answer. non Muslim tax यांको भीतर कोनटा लास्ट हेतला चंपारण सत्याग्रह 1800 सॉरी 1917 रे रावलट टेट 1918 रे जालियानबाग 1919 रे एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 रे तार कन्फ्यूजन हबो पचार दो 1918 19 कहि परिबो 18 रे कमिटी अछि रिकमेंडेशन फाइनल हेइतला तार इंप्लीमेंटेशन 19 रे हला तो एई सीक्वेंस अनुसार तुमरो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लास्ट रे हबो ओके मैच द फॉलोइंग स्लोगन इन देयर रेस्पेक्टिव लीडर्स वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी इनकलाब जिंदाबाद एक्चुअली इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह नुह जेटू एटी ऑप्शन देछि यू कैन राइट इट तो ये सीक्वेंस अनुसार 1 A B 2 C 3 D 4 इज राइट बट हसरत मोहानी जो ओरिजिनल हसरत मोहानी ये ओरिजिनल थिले जी की इनकलाब जिंदाबाद रो नेम बाहर करथिले पॉपुलराइज करथिले भगत सिंह को फाउंडेड द गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को सोहन सिंह भाकना which led strong roots in the Punjab San Francisco County Ghaddar party founded San Francisco in 1913 was spearheaded by Lala Hardayal also along with Sohan Singh Bhakna Kartar Singh so एठी Lala Hardayal देइनी तो Sohan Singh Bhakna ही लिखिबो Consider the following statement regarding Rama Devi Chaudhary. She was known as the mother of the nation in Odisha. She was closely associated with Mahatma Gandhi and participated in the civil disobedience movement. She was also first female member of Odisha Legislative Assembly. So, which of the above statement is correct? Which of the above statement is correct? जल्दी कहो जानी सब समझते non-mother of Odisha yet closely associated with this legislative first female legislative member no it had wrong achi 1 and 2 is the correct answer. Sarala herself joined the Congress in 1921. Mahatma Gandhi first visit करते Odisha first woman member of Odisha. So Sarala Devi जी की first woman ये नुह Sarala Devi जी की first woman legislative member not Rama Devi 1937 रे Sarala Devi elect थी. तो न्यूज़पेपर नवजीवन महात्मा गांधी अल हिलाल मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कॉमनवेल्थ अधिवेशन बॉम्बे कुलिंग फिजिकल मेला ये सही सीक्वेंस अनुसार अच्छी ये ए इज द करेक्ट आंसर मैं देखीदेव चैत्र 1 of the national calendar based on the Shaka era correspond to which one of the following तो यूपीएससी क्वेश्चंस तुमको आगो को भी आम यूपीएससी एंड ओबी जिते भी क्वेश्चंस आसीबो सबुतरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रो पीवाईक्यू भी रहिबो काइना पीवाईक्यू इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट पार्ट सो दैट यू कैन लिंक कि आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करि परछु माने
आमे एग्जाम रे रियल एग्जाम दवा भलिया सिचुएशन रे अछु वी कैन सॉल्व सो ग्रेगोरियन कैलेंडर बेसिकली 22 मार्च यूपीएससी क्वेश्चंस थिला चैत्र 1 ताकाईरा अनुसार so with reference to पट्टचित्र पेंटिंग ओडिशा consider the following statement पट्टचित्र last 5 questions quick last 5 questions traditional scroll painting the themes are often centered around the Jagannath Krishna and mythological narratives use of synthetic acrylic colors and modern brushes एटा नुह modern नुह so 1 and 2 is the correct answer literally cloth painting so common subject include Jagannath Krishna ये सब ठीक अछि traditional is natural color is not synthetic color not synthetic acrylic paints consider the following statement regarding fundamental rights under Indian constitution ये only to citizen भाई only नुहे only जोंटी लिखि दो आगे सावधान हो कि आउ थर दी थर तीन थर पढ़िबो क्वेश्चंस टा so 1 wrong ହେଇଗଲା so 2 in 3 right to equality include abolition of entitled and right to education is also article 21A under 21 under माने 21A with reference to Indian Parliament consider the following statement money bill can be introduced only in Lok Sabha not only say only आसीगला राज्य सभा has equal power ये भी नुह राज्य सभा equal power केमती आसीबो बट लोकसभा कथा ला कौन इक्वल पावर तो नहीं बट लोकसभा हाँ इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा दैट्स राइट देन ओनली मनी बिल तो ये स्टेटमेंट राइट अच्छी बट ओनली देइछि सेति मुझे तुमको कहली ये तो ये लोकसभा देइछि माने यू आर श्योर दैट मनी बिल इंट्रोड्यूस हम इक्वल पावर नुह एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड द बिल इज मनी बिल और नॉट सो 1 and 3 एटा बी इज द करेक्ट आंसर तो एटा बी हम ए भूल दे दीची आर्टिकल 110 Vice President elected by the Electoral College consists of member of both House of Parliament. That is right. They act as a ex-officio chairman Rajya Sabha is also right. President, Vice President act as a president when President foreign travel. भाई ये कैसे हो सकता है? So 1 and 2. A is the correct answer. 1 and 2. Last two questions. Indian Constitution can be amended by special majority of Parliament. Some provision also require ratification by half of the state legislature. President cannot refuse to give assent to the constitutional amendment bill. So right अच्छी केबे भी करि परिबे नाही right अच्छी ये भी right अच्छी so 1 2 and 3 D is the correct answer. Last question NDB established BRICS and headquarter South Africa ना भाई चाइना रे अच्छी ये स्टेटमेंट रॉन्ग हैला 2 and 3 50 रो ए होबनी 23 ओरिजिनल मेंबर ब्राजिल एशिया ब्रिक्स रे तार हेडक्वार्टर है सांघाई चाइना नॉट साउथ अफ्रीका तो से 1 रॉन्ग हैगला तो ये जो आंसर देछि एठी ए सेटा भूल हम एटा 1 and 2 देछि सेटा सी हम द आंसर 2 and 3 एंड फर्स्ट ब्रिक्स समिट हेल्ड इन रशिया 2009 रे तो इंडिया होस्टेड ब्रिक्स समिट अरे भाई एटा भी भूल अछि रे फर्स्ट ब्रिक्स एटा भी भूल अच्छी 1 and 2 भूल अच्छी सो 3 only 3 not this one right no I देखिनी टूटा okay guys so this is also right so this is how you can link करि परियो सब क्वेश्चंस रे एलाबोरेटली ब्रिक्स कोन देखि दबो गोटे ब्रिक्स ऊपर टॉपिक तुमर कवर हे जिवो ता ऊपर जहा क्वेश्चंस आसिले भी लेटेस्ट वर्जन देखि दबो तो जो माने एनरोल करिनाती ओएसहब रे आगो को ऑफलाइन बैचेस 30टा पिला ऑनलाइन बैचेस ऑनलाइन पाई 30टा पिला बहुत सबुठू मार्केट रे सबुठू सस्ता प्राइस रे एवं सबुठू बेस्ट आपन को पाई परिबे सब सिलेबस रो एवरी बीट ऑफ सिलेबस वी आर कवरिंग सो nobody can give you like this so do join thank you guys thank you for watching god bless you all jai jagannath namaskar do subscribe and like and share